हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान। आज हम जा रहे हैं किधर? ओके, आज ये कंटिन्यू दिस व्लॉग वेयर देयर आर पीपल। हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान। आज हम कहाँ जा रहे हैं? जय हिंद कॉलेज। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि करण इज ऑन अ पैनल ऑफ अ बिजनेस कॉन्क्लेव। आज मुझे जय हिंद कॉलेज का क्लेम टू फेम क्या है करण? कि वहाँ से ऐश्वर्या राय बच्चन पढ़ी हैं, वहाँ से विशाल ददलानी पढ़े हैं। आई थिंक क्वाइट अदर फ्यू एमिनेंट बॉलीवुड पर्सनालिटी। फीलिंग इज़ ग्रेट कि स्टूडेंट होते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, धीरे धीरे आपको अगर पैनल्स पे इनवाइट किया जाने लगता है तो लगता है ओहो हो। एंड वी विल सी यू इन द कैब। 2 points. Number one is that while it feels great that you're on a panel, the most important thing that we should always keep in mind is कि value add और impact audience को होना चाहिए in the stadium, डोम, क्लासरूम, किसी भी तरह का जो हॉल है वहाँ पे। क्योंकि हार्डली जब भी पैनल पे होते हैं, मैंने क्या देखा सामने कि 1 घंटे का पैनल होता है, देयर आर 5 पैनलिस्ट, तो आपको हार्डली 5 मिनट्स, समटाइम्स इवन 2 मिनट्स, 2 लाइनें कहने का मौका मिल रहा होता है। तो समटाइम्स फील दैट इसका पॉइंट क्या है। बट जो वहाँ पे बैठे होते हैं, मुझे लग रहा है जब हम स्टूडेंट्स हुआ करते हैं और अगर कोई 3 होते हैं तो कभी ना कभी तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई वैल्यू एडिंग वाला रहा होगा ना कि अरे यार वो सर ने उस वाले कॉन्फ्रेंस में जो बात कही थी ना, आज तक याद है। So you can't fabricate it. The idea is always to state my honest opinions. Otherwise, Googled answers बोलने का तो आज point है भी नहीं. The idea is always कि आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जितना भी अगर 8-10 साल का इकट्ठा हुआ है उसमें जेन्युइनली आपका मार्केटिंग है टॉपिक आज के पैनल का, तो उस मार्केटिंग के क्वेश्चन पे जो मुझसे पूछा जाएगा आपका क्या मानना है। होपफुली an 18-year-old who is learning marketing right from the basics of theory, उसको एक प्रैक्टिकल वाले पॉइंट पे शायद 10 साल आगे वाले भैया कुछ बता रहे हैं तो समझ आए, समझ ना आए, अप्रिशिएट करे ना करे, लगे ऐसे, टोटली डिपेंड्स। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मुझे पर्सनली जो लोग रियल लाइफ एग्जांपल से देते हैं और उसमें थ्योरी को अप्लाई करके बताते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता था वैल्यू ऐड। आई थिंक टुडे आल्सो यू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम व्हाट यू फेस्ड एंड देन हाउ यू हैव ओवरकम। आई थिंक As a panelist, I'm nervous. And I was scared. I shared these insecurities with Soumya as well कि यार एक तो obvious कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसका मुझे मतलब नहीं आता या आंसर नहीं आता तो I should be humble enough to say I don't know. And second thing is generally as a panel, as a flow कि okay first greeting होती है, उसके बाद theoretical answer के बाद अपने practical answer दिया जाए या end में conclusion remarks कैसे दिए जाते हैं। Public speaking, stage डिस्कशंस का एक फॉर्मेट कैसे होता है उसकी लर्निंग मेरे लिए भी है। नेक्स्ट आई टेल यू दैट इफ यू want to be on panels in such kind of discussions, industry conferences, discussions, debates, any kind of public speaking gig on stage, then how can you go about it and what are some of the things that are in your control so that you get invitations in the first place, right? More on that later. How many of you actually use Facebook actively? Like every day, Facebook? No, right? How many of you have actually listened to a podcast in the last 1 month and actually given 40 to 60 minutes head on? Quite a few. So the fundamentals have still remained the same because when it comes to marketing, it's just a product and you and you and you. The more I know you on a psychological level, I don't care what platform pops up tomorrow, even if it's a VR headset or an Apple Vision Pro. What your brand stands for, that needs to be the connecting thread across channels, across platforms, across technologies. Otherwise, you have a very big problem at hand. by the bay, literally by Okay, so back from the event, how to get invited as a panelist. Start projecting yourself as someone who has a lot of facts and opinions on subject XYZ. For example, for this panel itself, for the last 30 days or so, I had been posting regularly
on marketing on LinkedIn, which is why probably my reels were popping up. Not reels, but short format videos were popping up on people's LinkedIns. Sounds simple, right? Like in marketing, most of the insights are really simple, but we fail to or we forget to execute on it. And even if one of them out of the 500 students remembers something or it impacts him in a positive way, good use of 3 to 4 hours. Yeah. And bye.